नमस्कार गुरुजी। मेरा नाम आई एम सतविंदर सिंह कल्सी। हाँ जी, हाँ जी। So I am doing Ashtang Chikitsa course since July. हम्म। So I'm 38 years old. Actually, I had a jerky injury. That is also my mistake. I have written in that form which was given to us. What is the हम्म। reason for that? So due to which I have a very peculiar problem, and my C1 C2 joint is having some sort of subluxation. So I have जुड़ जाते हैं this वो, पता happened, है? sir. Yes, जुड़ Guruji. जाते हैं वो, जुड़ जाते हैं वो। So, जॉइंट्स जॉइंट्स Guruji, जो हैं वो आपस में दे मर्ज अप और व्हाट। no, they have that ligament is there. There is some transverse ligament and some ligament is there, which हम्म। is loose. So, there is some space at atlanto axial dislocation they call it. ओके। So the issue was not able to many doctors were first unable to identify the issue because हम्म। they thought that it's a cervical issue in the C4 C to have the issue in the upper neck area, the just below the skull, हम्म। हम्म। extreme stiffness, and my heart rate was very high. हम्म। So a doctor of US was able to identify and then suggest me few things, what kind of test should be done, but unfortunately India doesn't have those kind of tests. So they took my flexion extension MRI, and हाँ। then were able to identify one ortho. ओके। So it is a problem of C1 C2 and ligament issue is there, alar हम्म। ligament and transverse ligament. ओके। So I'm suffering since 2021 August, हम्म। uh, and this has completely changed my life. But slowly with physiotherapy and other things, I am able to recover a bit. But I am taking beta blockers because my heart rate is very high sometimes, and I have lost a lot of taste as well. My taste issues have also gone. हम्म। So I'm doing Ashtang Chikitsa, but when I do Hatha Vinyasa, then my problem increases a lot. So I do it अब very lightly, not forcing myself. Secondly, when I do Kumbhak, initially when we started the Vata portion, it was the things were getting better. I told ma'am, Aruna madam also, हम्म। but then it started to increase. I don't know why this is happening, and now I have extreme stiffness at the back. ओके। So even though the test is not available here, after doing the test, is there a treatment available? I took the US doctor suggested me to go for a platelet rich plasma in the joint so that the ligament can regenerate. I took one. I don't know. I didn't had much of improvement. Now let me tell you uh, the problem. Let me tell you the problem. And if you keep, it's just 3 months, your customization is done. Is it? Your customization is done and you're practicing the customized practices, isn't it? No, my customization is not yet done, Guruji. हाँ। तो अभी ना बहुत जल्दबाजी करने से ठीक नहीं होगा. लेट मी टेल यू, इट हैज एन ऑटो इम्यून कंडीशन ऑल्सो इन्वॉल्व. योर हार्ट Okay. रेट इंक्रीजेस. व्हाई हार्ट रेट इंक्रीजेस? Because your body releases more of adrenaline. Adrenaline क्यों release करा? Why it is doing it? The body is feeling risk. Your immunity shoots up, and thereby the adrenaline release has to happen, और वो फिर आपका हार्ट रेट बढ़ाता है. So why it is happening? Why this is happening? Uh, Even though we have done the diagnosis, मगर अभी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ. It will take a little time. Okay. पहले आपको कस्टमाइजेशन के बाद ना 3 महीने प्रैक्टिस करना चाहिए. ओनली देन. द सेकेंड थिंग इज द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग.
whenever you move your body, Hmm. what will happen? Whenever you stretch, there will always be muscle break, especially in Hmm. those bodies which is stiff. Hmm. So what we suggest when people get difficulty in Hatha Vinyasa, we say don't do Hatha Vinyasa, just do Anga Vinyasa and Kumbhak therapy. We suggest don't do Hatha Vinyasa, just do Anga Vinyasa and Kumbhak therapy. For Okay. then what will happen? The your Dakshin Bala is very weak. It has not just an implication on your body, it has an implication on your mind also. Hmm. You will have to realize it and don't think that this is something bad. नहीं नहीं, ये ठीक हो जाएगा. But you'll have to realize it कि if there is an implication on the mind, your mind will show a different kind of a reality than what is really real. तो आपका Okay. पेन भी दो 60% साइकोलॉजिकल हो जाएगा. Okay. So 40% physical, 60% psychological. Just see how aggravated the pain will become. Hmm. है ना? But it has Mhm. less of a physical implication. In fact, your body needs a lot of activity. The way your body is built, otherwise your digestion will be weak. You will have an acid reflux, constipation रहेगा और headache रहेगा और इस तरीके की चीजें रहेगी. है ना? Without Right. activity, there won't be absorption in the body. क्योंकि कफवात दोष है, मैं आपको साफ बता रहा हूं. अभी भी मैं वही बात कर रहा था. स्ट्रेनर में मलाई जम गई, अब वो कुछ पास ही नहीं हो रहा. When you do an activity, create a pressure, it will happen. Hmm. But to establish it in the body, it will take 6 months time. Okay. शुरुआत में, if we tell you to do exercise, what happens? Whole body pain. Hmm. Especially people who are stiff, वो थोड़ा सा भी अपने आप को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो मसल ब्रेक होगा and there will be inflammation and there will be pain. Hmm. But the muscle get regenerated within few hours. Approximately 48 hours में वो हो जाता है. So what happens if you are feeling lot of pain in one session of Kumbhak? You can give it a rest. Sometimes we say कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन शुरुआत करो because you are not able to take it. है Hmm. ना? Do it gently. हठ विन्यास अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप अंगन्यास और कुंभक थेरेपी करो. Okay. You do it for and after customization, do it for at least 3 months. आप ऐसा मान के Okay. चलो, it's not a short term fix. Agree. If there is an autoimmune condition involved in your difficulty, it's not a short term fix. क्योंकि आपको और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं. Hmm. स्टीरॉयड देना पड़ेगा, स्टीरॉयड देना पड़ेगा. नाउ अभी मैं आपको बताता हूं, जो प्लाज्मा विथ हाई प्लेटलेट अगर आपकी बॉडी में डालेंगे, बॉडी विल रिएक्ट. योर बॉडी विल नॉट अलाउ इट, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई है. क्योंकि आपका इम्यून शूटअप कर रहा है उस समय, आपके इम्यूनिटी के जितने फैक्टर्स हैं वो सब Hmm. हाइटन अप होते हैं. Okay. एंड देन इट गोज डाउन. फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है. अब इसमें एक ही सोल्यूशन दे रहे हैं, प्लेटलेट ज्यादा हो जाएगा तो रीजनरेट करेगा, मगर आपका बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको. Hmm. कोई भी डायग्नोसिस आप करवा लीजिए. देर आर 750 और डायग्नोसिस अवेलेबल इन द वर्ल्ड. अब बारिंग फ्यू विच आर मोस्टली रिलेटेड टू इन्फेक्शन, नो डायग्नोसिस हैज क्रिएटेड अ क्योर. Agree. एक डायबिटीज बंदा आप बता दो जो पूरे 100 साल में ठीक हुआ है बाय टेकिंग मेडिसिन एंड डूइंग द डायग्नोसिस ऑफ हाई शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटाइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने से कौन ठीक हुआ है 100 साल में? एक भी तो ठीक नहीं हुआ. सो व्हाट विल डायग्नोसिस डू? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म टू करेक्ट योर सिस्टम. तो उनका डायग्नोसिस से कोई ठीक होता ही नहीं है. कैंसर के डायग्नोसिस कितने सारे निकाल दिए. कैंसर 12% के रेट से दुनिया में बढ़ रहा है. हार्ट अटैक, यंगस्टर्स आर डाइंग ऑफ हार्ट अटैक. Right. राइट. सो Right. Right. न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम
वी हैव अ डिफरेंट मेथडोलॉजी टू लुकिंग एट योर सिस्टम, ठीक है? बट इफ यू थिंक देर इज अ पिल विच कैन Hmm. करेक्ट यू, अभी तक हुआ नहीं 100 साल में, आगे 100 साल में भी नहीं होगा, द वे दे आर लुकिंग एट ट्रीटमेंट। तो आपको अपने शरीर को ठीक करना ही पड़ेगा, एंड इट्स नॉट एन इजी पाथ फॉर समबडी हुज सिस्टम हैज गॉन हेवायर। Hmm. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। कस्टमाइजेशन होने दीजिए, 3 महीने Okay. कस्टमाइजेशन के बाद में प्रैक्टिस करो। बीच में कोई तकलीफ होती है, यू कैन टेल कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, विल सी हाउ टू एडजस्ट थिंग्स। आपको कैसे एडजस्ट करो आप, हम आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे। राइट, इनिशियली इफ यू आर फीलिंग टू मच ऑफ पेन, you can take some painkiller, but what we will tell you, slowly you come out of 50% of your chemical should be replaced by something which is natural in six Okay. months time. In 6 months time, 3 months time after customization, 50% आप reduce करो chemicals अपनी life में. In 6 months time, reduce 100% chemical, come to natural support. In 1 year's Okay. time, you'll see you will be somewhere at a different plane from where you started. Okay. So, if we have deviated this body, please give this body some time. Mhm. है ना, थोड़ा इसको टाइम दीजिए। ये आपका रीजनरेशन बढ़ता ही है, बट रीजनरेशन के लिए बॉडी हैज टू यूज वॉट एवर यू आर ईटिंग, उसका वो स्ट्रेंथ Agree. फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, तब वो रीजनरेट करना शुरू करेगा। रीजनरेशन विल हैपन, एंड इन योर Okay. केस रीजनरेशन 100% विल हैपन, क्योंकि आपका बॉडी का टाइप ही ऐसा है जहां पे रीजनरेशन उसमें फास्ट हो सकता है, इफ एवरीथिंग फ्लोज इनसाइड प्रॉपर्ली। इट इज नॉट फ्लोइंग, है ना, तो वो रीजनरेशन होगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो। और कभी भी ज्यादा तकलीफ आ रही है ना, तो ये Hmm. सोचो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ माय साइकोलॉजी प्लेइंग अगेंस्ट मी, तो उसको भी ध्यान में रखना है। Agreed, Guruji. And once, once I was listening to you, some video of yours, and then that video you said, sometime you should leave some problems to me, हाँ means हाँ, to you. So that was बिल्कुल। so, it was so touchy to me. I don't know how I felt a connect. I said, a ray of hope has come. Um, I then only I joined, होल्ड and ऑन टू दैट रे ऑफ होप, कहीं नहीं भाग, उसको उसे छोड़ के मत जाना, यू विल बिकम फाइन। thank you, ठीक है। Guruji. Thank you. हाँ I was looking to talk to you since a long time. I don't know how it happened today. It's a God's gift to me, to be very honest. I just came from office and texted Neha ji. I don't know. I in my car I only texted her. I need to speak to Guruji, and then she said join this link. I don't know how I got connected, and it's a grace. It's a blessing, and I really feel this is the way by which I will get corrected, because this thing happened to me because of following something which I have written in my paper as well. You will, if you read it, you will know. यस 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 यस, बट यू नीड टू ड्रॉप ऑल दोज थिंग्स। I have dropped it. I'm not doing it anymore. So probably, as you said, I'll take time. One last question I want to ask. You have suggested some medications in the group it was given. यस So something to sniff or something to smell. yes, yes, I'm that not will be helpful. suggesting That will to be helpful. It is Navratan Nasya. It will be helpful for you. And there is another thing which will help things flow in the body, which is Gunma Kudori. It's a Siddha medicine. है ना, Okay. नवरत्न दास्य एंड गुन्म कुडोरी। Okay. So, है ना, ये दोनों लेना शुरू करो, इट विल बी ऑफ हेल्प। एंड इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड देन टेक हरित की और समथिंग फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, उसको भी ध्यान रखो। Okay. ठीक है। Then for the heart rate, I'm taking beta blockers. But after the Kumbhak, I'll tell you the very honestly, I have made it half. I was हाँ taking ठीक 12 है, point, I was taking 25. Now I'm taking 12.5 only. हाँ हाँ And ठीक it है, is ठीक। working fine. हाँ, इट विल, यू विल नॉट नीड इट आफ्टर फ्यू मंथ्स। चिंता मत करो, यू विल नॉट नीड ऑल दोज बीटा ब्लॉकर्स, दे आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, Thank you, Guruji. चिंता मत करो, Thank चिंता you. मत करो।